News 18 and I'm Sakshi Singh Lichori. Over the next 30 minutes, we'll be walking you through all the top headlines from the nation and across the globe. At the top of this segment, taking you straight to the state of West Bengal. In a major development, the West Bengal Health Department has now suspended Sandeep Ghosh, the former principal of RG Kar Medical College and Hospital, in connection with an ongoing investigation into the RG Kar financial irregularities. Ghosh had been remanded to 8 days in CBI custody. Meanwhile, the protest for justice for Abhaya continues. Student doctors are now calling on Kolkata residents to switch off their lights and form a human chain. The BJP, in fact, has also announced a chakka jam across the West Bengal, intending to halt traffic for 1 hour. The Home Ministry has also filed an affidavit in the Supreme Court accusing the Chief Minister of not cooperating with the women CISF staff in West Bengal. The application said that duty personnel are facing a lot of difficulties in performing their duties due to non-availability of accommodation, security gadgets and paucity of transportation for them as well. Since yesterday, the students, the junior doctors, they are here on the road. This will be some 2 kilometers away from Lal Bazaar, the police headquarters. Their demand is they'll go to a certain extent and then they will be giving their deputation to the police commissioner. Their demand is police commissioner Vineet Goyal should resign. The fact is yesterday they were not allowed till the point they wanted to, and from evening till now today in the morning they are sitting in dharna all through the night. They have come up with songs, they have chanted the slogans, but still, as you can see, that the students, the doctor students, they are in no mood to go back. The fact that Sandeep Ghosh is arrested, they are happy with that, but they are sticking to their demand. We'll talk to some of the students out here. हम लोग obviously खुश है, लेकिन जैसा कि मैंने जैसा कि उसने बताया कि ये हमारा एक्चुअल दाबी नहीं था, एक्चुअल डिमांड में नहीं था। संदीप घोष अरेस्ट हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है और हम लोगों को बहुत क्या सही में इतना करप्टेड था जो एलिगेशन? बहुत ही करप्टेड आदमी था। पहले से ये सब एलिगेशंस अभी के लिए नहीं है, ये बहुत साल पहले से ही है। आपने सुना होगा आरजी कौर का असिस्टेंट सुपर अख्तर अली बोल के है, तो उन्होंने 2 साल पहले ये सब एलिगेशन एकदम प्रूफ के साथ दिया था, लेकिन तब भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया था उसके ऊपर। कोलकाता पुलिस बोले या फिर गवर्नमेंट बोलिए, एकदम थ्रेट सिंडिकेट चलाता था, सीनियर डराता था कुछ। जी बिल्कुल, थ्रेट सिंडिकेट सिर्फ आरजी कौर में ही नहीं, यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है वो हर एक कॉलेज में, हर एक मेडिकल कॉलेजेस में, आप जिसका भी नाम ले लो, उसी में थ्रेट सिंडिकेट चलाता था। We are again in a rally where you can see a lot of women are there and they are doing their protest and they are demanding justice. We have Shubhendu Adhikari also walking in that rally. आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री को पदत्याग करना चाहिए? बिल आज आया है। We want step down of Chief Minister Mamata Banerjee. And today what you have to say on the anti-rape bill? You have raised it, you have supported it, but there is question. We want early execution of this bill. It's responsibility to Chief Minister. Please accept my amendment. But he is saying it Because all evidence are destroyed in RG Kar case. For that reason, on behalf of the BJP legislature party, I submitted some amendment. This amendment covered all the doctors, those who were involved in the medical process, police personnel, those who are involved in investigation process, and give all security to the witness, and within 30 days punishment must be ensured. टीएमसी की मानसिकता तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर है, इसलिए टीएमसी तो नाम ही है इनका। जिस प्रकार से इनकी विधायक ने, लवली मैत्रा ने, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को कसाई कहा है, सोचिए, वो डॉक्टर्स न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हैं, बेटी के लिए न्याय चाहते हैं, माता पिता उनके साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके प्रोटेस्ट को सही बताता है, पर टीएमसी इनको कसाई बताती है। क्यों? क्योंकि वो सच की बात करना चाहते हैं और वो बलात्कारी को सज़ा दिलाना चाहते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि टीएमसी का चाल चरित्र चेहरा है। उदयन घोष ने बोला उंगली तोड़ देंगे, जिस प्रकार से कुणाल घोष ने पुलवामा से तुलना की, अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि ये महिलाएं बॉयफ्रेंड के साथ जाती है।